So we'll start with motion in a straight line. This chapter is also at times, known as kinematics. So in many books, you will find it written as kinematics, and in many books, you will find it written as motion in a straight line. So we'll keep it plain and simple, motion in a straight line, जो NCERT में भी यूज हुआ है, नाम वही यूज करना चाहिए. सो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना. तो जो बेसिक वाला पोर्शन, उसमें ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा. I'll try and rush through those portions because those are basics and you have already covered it in 11th and 12th. So if you are not able to understand some portion, just stop me there, and you can ask your doubts. So let's go ahead, and जहाँ पे जरूरत होगा टाइम एम्फसाइज करने का, वहां मैं टाइम दे के फिर बताऊंगा. तो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म मोशन से स्टार्ट करते हैं. सो मोशन इज द change in position of an object with time. When do you say that an object is moving? हमें पता कैसे चलता है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? तो भाई किसी और ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, अगर दूसरा वाला ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा होता है, then we say that it is moving, right? So when an object changes its position with respect to a stationary object, we say that the object is moving, right? So branch of physics which deals with the study of motion of material object is called mechanics. So that branch of science which deals with the study of motion of material object, this is called mechanics. Okay. So, under mechanics, what we are going to study, the chapters is motion in a straight line. So 11th class का सबसे जो important portion है, ये mechanics ही बोला जाता है. So motion in a straight line इसके अंदर आ जाएगा. फिर हम लोग पढ़ेंगे motion in a plane, right? Then we will study Newton's laws of motion. Right? Then we will study friction. Okay. So after friction, we will study work, energy, and power. Right? And then after work, energy, and power, we'll study momentum, collision, and momentum and collision. So momentum, center of mass, and collision. Then we'll cover rotation, right? So these are the 7 chapters which we'll be covering under this mechanics. So these all come under mechanics, right? And all these 7 chapters, this is one of the most important portion in class 11. So you will find that almost 30% of the question, or in fact you can say 35% of the question which comes in NEET is from these chapters only. So this is the importance. अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 35% of the syllabus over हो जाएगा, right? तो इसीलिए बहुत ध्यान देना है इन सब चैप्टर्स पे, और खूब प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि ये मैकेनिक्स ऐसी चीज है which will be used in electrostats also. You will use it in magnetism also. Wherever you have a force, whether that force is due to electrostatic force, or it is due to a magnetic force, or it is because of the gravitational force, wherever force is used, mechanics will come into picture. That's why mechanics is very important. Okay, so now mechanics can be broadly classified into following branches. So there are 3 branches of mechanics. One is statics, other is kinematics, third is dynamics. Statics क्या है? जब हम लोग equilibrium of object के बारे में पढ़ते हैं, means कि when an object is not changing its position with respect to time, and we are looking at all the forces which are acting on it and balancing everything, this is called statics. So all the equilibrium based question is in statics. So let's say when the forces are in both the direction equal in magnitude, then we say that the body is not moving. And if a body is not moving, that means it is in equilibrium. And because it is not moving and in equilibrium, we call it is in static equilibrium. So this branch of science which deals with the study of material object at rest is known as statics. Kinematics is that branch of mechanics which deals with the study of motion of material object without taking into factors which cause motion. So we are concerned only about velocity, acceleration, displacement, distance, speed, and nothing else. So we are not concerned about
कि what is causing that motion. तो cause of motion के जाने बिना हम अगर उसके speed, velocity, acceleration इन सब चीजों के बारे में जाने, इस field of study को kinematics कहते हैं. तो ये mechanics का वो portion हो गया जिसमें हम लोग एक object के motion को या उसके acceleration को, velocity को, speed को, distance, displacement इन सब को study करते हैं. Then comes dynamics. So, if you talk about, so motion in straight line and motion in plane comes under kinematics. Then comes dynamics. Dynamics is, Newton's laws of motion and friction. This comes under dynamics. So basically the cause of motion. So it is that branch of mechanics which deals with the study of motion, taking into account the factors which are causing the motion. So factors which cause motion comes under dynamics. Clear है बच्चों? Have understood it? Now rest and motion. So rest and motion are relative terms. For example, a person sitting in a moving train is at rest with respect to his fellow passengers, but is in motion with respect to objects outside the train. So when we say rest and motion, these are not absolute terms, these are relative terms. बहुत ही confuse करता है लोगों को कि भाई एक ऑब्जेक्ट, मान लो एक पैसेंजर ट्रेन पे बैठा हुआ है और उसके सामने जो दूसरा पैसेंजर बैठा हुआ है, तो ये दोनों पैसेंजर, अगर ये ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, तो ए अपने रेस्पेक्ट में बी को स्टेशनरी ऑब्जर्व करेगा, बट ये ट्रेन जब इधर मूव कर रहा है तो उस प्लेटफॉर्म पे जो बंदा सी खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में ए और बी दोनों मूव कर रहे हैं. So B is in rest with respect to A, but B is in motion with respect to C. So it depends with respect to what you are considering. So rest and motion are relative terms. So you will have to see relative to what you are finding whether the object is at rest or is in motion. So when is an object called at rest? An object is said to be at rest if it does not change its position with time with respect to its surrounding. And an object is said to be in motion if it changes its position with time with respect to the surrounding. Now, types of motion of a body, there are two types majorly. One is rectilinear or translatory motion, other is rotatory motion. Then you have a vibrational motion as well, which we will see later on. So rectilinear or translatory motion, okay, so there are three types of motion: translatory, vibratory and rotatory. So ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तब उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन में बोलते हैं. सो रेक्टिलिनियर मोशन इज द मोशन इन विच अ पार्टिकल और पॉइंट मास, है ना, ये ध्यान में रखने की चीज है, एक पॉइंट मास अगर डिस्टेंस मूव करता है स्ट्रेट लाइन में उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. और यही ट्रांसलेटरी मोशन में पॉइंट मास नहीं होगा, जब बल्कि कुछ एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट होगा. सो ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच नॉट अ पॉइंट मास बॉडी, which is not a point mass body. So that body is not a point mass, it has its own dimension. So when it is moving in a straight line, it is called translatory motion. So translatory motion में body का कुछ dimension होगा. rectilinear motion जो बोलते हैं वो point mass होता है. अब circular और rotatory motion second है. So a circular motion is that motion in which a particle or a point mass body is moving on a circle. So when a particle is moving in a circle, it is called circular or rotatory motion, right? So circular motion, point mass is moving in a body. Rotatory motion, when a rigid body, it is not a point mass. Let's say a car moving in a circle, this will be called rotatory motion. Why? Because here the particle is not a point mass, but it has its own dimension. तो सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन एक ही चीज है. सर्कुलर मोशन पॉइंट मास के लिए होता है, रोटेटरी मोशन किसी ऑब्जेक्ट का जिसका अपना खुद का डायमेंशन है, उसका वो जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उसको हम लोग रोटेटरी मोशन बोलते हैं. देन वी हैव ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. सो ऑसिलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली about a fixed point in a definite interval of time. And oscillatory motion, the amplitude is very small. So
oscillatory motion में when an object is moving in to and fro motion and the amplitude is very small, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे vibrations होते हैं, ठीक है, microscopic, you cannot see it by naked eye, ठीक है. So अब ये मतलब अगर नॉर्मल ऑसिलेशंस होगा उसको ऑसिलेटरी मोशन, और यही अगर ऑसिलेशन बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो उसको वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे. सो यस सतप्रीत, yes Satpreet, you want to ask something? Yes Satpreet, which term you want to ask? So please start using mic also, because using a mic would help you ask questions faster, and to have a better interaction between me and you. In oscillatory motion, if torque is linear, the motion is said to be simple harmonic motion. या सिंपल हार्मोनिक मोशन के और भी बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं. पहला ये कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the displacement. F is equal to minus of kx. Negative sign shows that it always comes back to a. So a body is said to be in a body is said to be moving with simple harmonic motion when the force, the restoring force, is directly proportional to the displacement minus kx. So F should be, the force F should be proportional to x. Then it is said to be in simple harmonic motion. Is it clear, Satpreet? And torque is linear is not necessary. Torque can be rotatory as well. It can provide that rotatory effect as well. So, an object like in, when I talk about simple pendulum, the simple pendulum, it's not a linear motion which is happening. So there is an angular SHM as well and linear SHM as well. So there are two different kinds of SHM. Satpreet, is it clear? So what I say, suggesting you guys should use your mic to ask your question, and please have a headphone with a mic, or you can use the mic of your laptop or the device from which you are logging in. Why? Because it will help you. तुम्हें question तुरंत पूछने में help करेगा, और हम लोग को interact करने में भी help करेगा. जितना ज़्यादा interaction हम लोग से होगा ना, टीचर से interaction बहुत ज़रूरी है. कोई भी चीज़ को, मान लो तुमने 2 साल 1 साल जो अभी पढ़ाई करोगे मेरे साथ 1 साल, तो उसमें जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा ना मेरे से, वो बॉन्डिंग नहीं बनेगी. बॉन्डिंग होनी क्यों जरूरी है? क्योंकि देयर इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम अ टीचर टू द स्टूडेंट. That only happens when there is a bond which develops. You start respecting us for the knowledge which I share, and then when you respect me, I will have that affection towards you, because in reciprocation है ना, सारा reciprocation है. तुम एक कोई बात नहीं सतप्रीत, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब भी तुम कर लो, 1 2 3 दिन में, 2 दिन में थोड़ा अरेंज कर लो, क्योंकि हम लोग फिर वो ज्यादा, क्योंकि 1 साल पढ़ना है ना, 1 2 क्लास की बात होती तो कोई बात नहीं, बस चैट पढ़ के और रिप्लाई करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि क्लास में मैं पढ़ाने समय आई डोंट चेक द चैट्स वेरी ऑफन, तो उससे क्या है कि तुम लोग का डाउट थोड़ा रह सकता है. तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि यूज हेडफोन्स टू आस्क योर डाउट्स, एंड जितना ज़्यादा आप डाउट पूछेंगे, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी टीचर्स के साथ. अभी देखो ऑफलाइन क्लास में क्या होता था कि आप क्लास में आए और मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपकी कॉपी भी देख रहा हूँ, आप मेरे से बात भी कर रहे हो, पूछ भी रहे हो. यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं है. तो पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी? वो आप जितने सवाल खुद पूछोगे माइक को यूज करके, और जितना इंटरेक्ट करोगे. मैंने पूछा हाँ समझ में आ गया बच्चों, सबने बोला हाँ सर समझ में आ गया, और हाँ सर से वो एक कनेक्ट है जो कि लगता है कि आप सुन रहे हो और आप समझ रहे हो उन चीजों. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. बाकी इट्स योर डिसीजन, आई कांट फोर्स समथिंग ऑन यू, जैसा भी आपको अच्छा लगे. ओके, सो लेट्स मूव अहेड.
So point mass object. So when an object doesn't have a dimension, when the object is moving a larger distance as compared to its dimension, we consider that object to be a point mass object. For example, let's say I am driving my car from here till Agra, from Noida to Agra. So when I drive my car from Noida to Agra, the distance, let's say, is 200 kilometers, and the length of my car is, let's say, 3 meter or 4 meter. So 200 kilometer is very large as compared to 4 meter. Then in that case, that car will be considered as point mass. The dimension of car will be assumed to be a point mass object. तो इसीलिए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट एक कॉन्सेप्ट है जहां पे हम लोग एक पूरे बड़े से बिल्डिंग को भी पॉइंट मास मान सकते हैं, कंसिडरिंग कि जहां पे हम लोग मोशन कंसिडर कर रहे हैं वो काफी ज्यादा डिस्टेंस का हो एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है. नाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, it is convenient to choose a rectangular coordinate system consisting of three mutually perpendicular axes x, y, z. The point of intersection of these three axes is called origin and serves as the reference point. तो कभी भी जब मोशन कंसिडर करते हैं ना तो एक origin कंसिडर करना जरूरी है भाई. जब मैंने बोला कि एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में, so let's say ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है, तो इस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन को जनरली रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं. और इसके रेस्पेक्ट में हम लोग मोशन कंसीडर करते हैं. पहले ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था, तो बाद में बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो उसका मोशन जो है ए से बी तक ऐसे हो गया. ये इसका पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया. सो व्हेन आई सेड कि मोशन क्या था, मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. Right? So the stationary object here is the origin, which is not moving. So any change in position of an object with respect to this stationary point is called, the motion of the object. And this stationary point is the reference point, which is the origin. And the x, y, and z axis attached to this origin is called frame of reference. इसको क्या बोलेंगे? x, y, z axis को frame of reference. इसी frame में हम लोग सारे motion को consider करें. Clear है बच्चों? So the frame of reference is a system of coordinate axis attached to an observer having a clock with him. तो जो ऑब्जर्वर है वो ओरिजिन पे बैठा हुआ है और साथ में एक क्लॉक भी लेके बैठा हुआ है जिससे टाइम जो है वो मेजर करता है. तो x, y, z axis attached at the origin and the observer sitting at the origin with a clock with him is called frame of reference. Okay. So there are two types of frame of reference. One is called inertial frame of reference and other is non-inertial frame of reference. So inertial frame of reference क्या है? When the frame of reference is either at rest or moving with uniform speed or velocity, we call it to be in an inertial frame of reference. दूसरा पॉइंट जानने वाली बात यह है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ओनली वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का क्या मतलब, सेकंड लॉ, न्यूटन्स लॉज, कोई भी न्यूटन्स लॉज इज ओनली एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये जो हम सेकंड लॉ को लिखते हैं ये हम लोग जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ ही लिख सकते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं लिख सकते. So frame of reference are of two types. One is inertial frame of reference, other is non-inertial frame of reference. Inertial frame of reference is frame of reference which is either stationary or moving with uniform velocity. And non-inertial frame of reference is one in which Newton's first law of motion does not hold good. It is moving with, the Newton's first law is not valid and it is moving with an accelerated motion. तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद ही एक्सेलरेट करता है उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. और जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो स्टेशनरी है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको वी कॉल इट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दो तरीके का फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड है, एप्लीकेबल है. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो जनरली Earth is called an inertial frame of reference.
our earth is called an inertial frame of reference. But एक तरह से देखा जाए तो तुम देखो अर्थ खुद भी रोटेट कर रहा है और रिवॉल्व कर रहा है. जब रोटेट और रिवॉल्व खुद भी कर रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है, मतलब उसमें एक्सेलरेटेड मोशन है. अगर वो ऑर्बिट में घूमेगा सन के अराउंड तो उसमें एक्सेलरेटेड मोशन है. और जब एक्सेलरेटेड मोशन है तब हम उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बोल सकते. बट फॉर आवर कंसिडरेशन, मतलब जो हम लोग लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या फिर जो हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं, इन सब के लिए 11th-12th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से या नीट के स्टैंडर्ड के हिसाब से अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्लियर है बच्चों? Okay. Now, for the motion of object on earth, the frame of reference attached to a person on earth is taken as inertial frame of reference, right? So the frame of reference which is attached to a person on earth is taken as inertial frame of reference. Okay. So अब हम वन डायमेंशनल मोशन के बारे में बात करेंगे. The motion of an object is said to be one-dimensional motion if only one out of three coordinates specifying the position of the object changes with respect to time. Okay. So motion of an object क्या है? So one-dimensional motion क्या हो गया? जब एक ही डायमेंशन चेंज कर रहा है, या तो x कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, y कोऑर्डिनेट चेंज करेगा या z कोऑर्डिनेट चेंज करेगा. One out of three coordinates, either of these coordinate systems, only one coordinate, if it changes with respect to time, we say that the object is moving with one dimensional motion. So जैसे कोई ऑब्जेक्ट x एक्सिस के along मूव कर रहा है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है. So let's say this is x, this is y, this is z. We can consider anything. We can consider this as x, this as y and this as z, or this x, this y and this z. हमेशा बस एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है. तो ये अगर x एक्सिस के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसका देखो हमेशा x कोऑर्डिनेट ही चेंज करेगा, y और z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा. बिकॉज y और z कोऑर्डिनेट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, इस तरह के मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं. वी कॉल दिस काइंड ऑफ मोशन एज वन डायमेंशनल मोशन because y and z coordinate is not changing, only x coordinate is changing, right? So in one dimensional motion, the object moves along a straight line. It will always move in a straight line, because if it moves in a curved path, then two of the coordinate will start changing, and then it will not remain one dimensional motion, it will become two dimensional motion. So the object moves along a straight line or a well-defined straight path. Therefore, one-dimensional motion is sometimes called rectilinear or linear motion. So one-dimensional motion is also known as rectilinear or linear motion. Then we have two-dimensional motion. What is this two-dimensional motion? The motion of an object is said to be two-dimensional if two out of three coordinates specifying the position of the object changes with respect to time. So such a motion is called motion in a plane. So motion in a straight line is one-dimensional motion. Motion in a plane is a two-dimensional motion. For example, let's say we have this, x, y, z axis. This is x, this is y, and this is z. तो ये ग्राउंड लेवल है एक्स वाई कोऑर्डिनेट. इस प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे कर्व पाथ में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे देखो हर मोमेंट पे z कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट रहेगा, x और y कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पे x और y एक्सिस के अलोंग दोनों तरफ मोशन हो रहा है. तो ऐसे मोशन को हम लोग टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, क्योंकि दो डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं. या फिर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ देखो क्या क्या चेंज कर रहा है, y चेंज कर रहा है और z चेंज कर रहा है. तो ये yz प्लेन में जो मोशन है, तो ये टू डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है y और z. अब थ्री डायमेंशनल मोशन है. थ्री डायमेंशनल मोशन में तीनों कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे. मान लो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z. एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके गिरा, राइट? तो देखो तुम्हारा z भी चेंज कर रहा है. ये मान लो x है, ये y है और ये z है. तो किसी पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, राइट, इधर से इधर आया, राइट,
तो यहाँ पे z भी चेंज कर रहा है, x भी चेंज कर रहा है और y भी चेंज कर रहा है, राइट। तो हर मोमेंट पे तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहे हैं, ऐसे मोशन को हम 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? और द पाथ फॉलोड बाय अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। तो जो पाथ फॉलो करता है, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो जो जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। सो द पाथ फॉलोड बाय अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पे चलते हैं। So to describe motion along a straight line, we can choose an axis, say x-axis, so that it coincides with the path of the object. Let's say an object was moving in a straight line like this, you know. So in that case, what we'll do, we'll consider this as x-axis, this as y-axis, okay, and the axis which is coming out of the plane as z-axis. So जिधर भी motion हो रहा है ना, उसी को एक axis मान लेते हैं हम, x, y या z, किसी को कोई भी चीज मान सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप ये जो, अगर हम लोग इसको ऐसे नहीं मानते और ऐसा मानते, तो ये अब ये क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन होगा। तो उससे बेटर है कि हम लोग एक एक्सिस इसी के लॉन्ग मान लें, तो 1 डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल बी इजी टू सॉल्व, राइट। सो डिपेंड करता है हमारे चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के से। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर चूजिंग, द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। डिपेंडिंग ऑन दैट we can say that whether it is a 1-dimensional motion, 2-dimensional or 3-dimensional motion. Now let's come to motion in a straight line. The motion of a point object in a straight line is 1-dimensional motion. So this motion of a point object in a straight line is 1-dimensional motion. So mathematically, the position of the object in 1-dimensional motion can be expressed as x is equal to xt or x is equal to ft. So x is a function of time. X is equal to ft का मतलब x is a function of time. That means the position of an object depends on time. Function of time मतलब as time changes, x will also change accordingly. So x is a function of time, right? So for a body which is moving, we say that if it is a 1-dimensional motion, then we say that the x coordinate changes with respect to time, that is x is equal to ft. Thus, to study 1-dimensional motion, we have to measure both the position and time at various instants. So if you have to study 1-dimensional motion, you should know the position and time of an object at different positions, right? कि भाई time t is equal to 1 second पे object x is equal to 1 meter पे था, और time t is equal to 2 second पे let's say object 10 meter पे पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल जो डिस्टेंस मूव किया है 10 minus 1 9 मीटर मूव किया है, और जो टाइम लगाया है वो 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड 1 सेकेंड का टाइम लगा। So an object in 1 second moves a distance of 9 meter, then we say that the speed is 9 meter per second, right? So basically आपको क्या करना होगा, measure both position and the time so that you can study the 1-dimensional motion. The origin of time axis can be shifted to any point on the time axis. तो कोई जरूरी नहीं है जहाँ पे पोजीशन 0 है वहीं पे टाइम को 0 दे, राइट। सो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उससे हम लोग टाइम का ओरिजिन को पता करते हैं। वी फाइंड आउट कि वेयर द origin of time axis is to be taken. The time measured after the origin of time axis is taken as positive. So let's say when I say then an object is at origin at time t is equal to 0 second, and after 4 second the object is at let's say 10 meter. So ये जो हम लोगों ने टाइम मेजर किया, ये हम लोगों ने 0 से मेजर किया, बेसिकली ओरिजिन से। नेगेटिव टाइम कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, what does negative time means? Negative time का मतलब होता है कि the time which has already occurred. So if I say 5 seconds before time t is equal to 0, the object was present at some position. So here what we are doing, we are talking about a negative time, okay?
So time interval between 2 points on time axis does not change due to shift in origin of time axis. So that's why we always talk about time interval. The origin of position axis can be shifted to any point on the position axis. Again, the position axis can be shifted to any point. The distance measured to the right of the origin. So anything measured to the right of origin is positive and to the left of origin is negative. In case of motion along vertical line, anything measured above the x-axis or above the origin is positive and below the origin is negative. The distance between two locations on position axis does not change due to shift in the origin of position axis. So position axis के origin को change करने से distance between two objects does not change. ठीक है? Now we have already seen all the physical quantities are of two kinds, scalar quantity and vector quantity. Scalar quantity are those which has only magnitude, and vector which has magnitude as well as direction. This we have already studied in vector thing. Now path length. So what does path length means? The path length of an object in motion in a given time is the length of the actual path traversed by the object in a given time. Let's say an object starts from A and reaches point B. Okay, so along this path, then length of this whole path will be equal to distance traveled. So actual distance traveled. So path length is actual distance traveled. And path length is what? It is a scalar quantity. So actual distance measure करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक thread को लेते हैं, इस thread को इसके along बिछा देंगे. So what we'll do, we'll lie down the thread along this path, right? So this is the thread length. Now after that, what we do, we measure end to end, right? So when we measure it end to end, the length, we'll get the length of this thread AB. है ना, सीधा करके हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं. तो वो जो डिस्टेंस मेजर होता है वो डिस्टेंस होता है, बेसिकली द एक्चुअल पाथ लेंथ. डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अच्छा, उसके अलावा डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट? Distance cannot be negative, it cannot be zero. When an object has moved, it will never be zero, right? So now let's talk about displacement. Displacement is something, the shortest distance between initial and final position. We call that as displacement. So this is the shortest distance. So straight line से A और B initial और final position को join कर देंगे तो वो हमारा shortest distance हो जाएगा, which is called the displacement AB. So displacement of an object in motion in a given time is defined as the change in position of object in a given time. It is the shortest distance between the two positions of the object in a given time, and its direction is from initial to final position of the object during the time interval of given interval of time. So now displacement is a vector quantity as it possesses both magnitude and direction. Displacement क्या है? Displacement is a vector quantity. Okay, it has both magnitude and direction. Displacement of an object can be positive, zero, or negative, right? So now if we see the differences between displacement and distance, so उसके पहले, so displacement of a particle in a given interval of time is independent of choice of origin. So origin से फर्क नहीं पड़ेगा, initial और final position पे बस फर्क पड़ता है. Original origin कहीं पे भी हो, displacement same आएगा. The displacement of a particle in a given time does not tell the shape of the path followed. Shape can be found out only by distance traveled. Displacement will give you a straight line path from initial to final position. So it does not tells you the shape in which the object is moving. The magnitude of displacement of a particle between two positions is the shortest distance between them. Magnitude of displacement of particle in a given time t is equal to distance traveled by the particle in time t if the particle is moving along a straight line without changing its direction of motion. So if a particle goes from point A to point B in a straight line, then in that case, without changing its direction, so in that case, distance is actually equal to displacement. So distance or displacement equal कब होगा? When the object is moving in a straight line and in the same direction. Last point is the magnitude
of displacement of a particle in a given time is less than the distance traveled by the particle in that time if the particle does not move along the straight line. So तुम directly ये लिख सकते हो कि by distance is always less and equal to displacement. Sorry, greater and equal to displacement, right? So displacement is shortest distance, right? It will be equal to distance only when both the bodies are moving in a straight line in the same direction. Now, the difference between distance and displacement we have already discussed. So, distance, we know that it is an actual path traversed, and displacement is the shortest distance. Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Distance traveled by an object in a given time is never negative or zero, but displacement can be positive, zero, or negative. Distance traveled in a given time is either equal to or greater than displacement, and displacement is less than or equal to the distance. The distance covered by an object between two positions can have many values depending on the path followed. Distance कुछ भी हो सकता है, displacement एक ही value होगा. That is the shortest path. The distance traveled by the object between two positions tells the type of path followed. Distance क्या बताता है? Type of path. Displacement between two positions does not tell the type of path followed. Now speed के बारे में बात करेंगे. Speed of an object in motion is defined as ratio of total path length. So speed is actual path length by time taken. So speed is total distance traveled, actual path which it has taken. So distance by time is speed. So distance is what? Actual path length. So distance by time is speed. Actual path length taken upon time taken. क्लियर है सभी को? फटाफट कुछ क्वेश्चंस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे पहले. So these questions are the kind of questions which are being asked in NEET. An old man goes for a morning walk on a semicircular track of radius 40 meter. ठीक है? So semicircular track में एक आदमी जा रहा है. यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंचा. Semicircle के लिए, right? On a semicircular track और इसका radius क्या है? The radius of this track r is equal to 40 meter. If he starts from one end of the track and reaches to the other end, the distance covered by the man and his displacement. यहाँ से start करके यहाँ तक पहुंचा B point. Distance और displacement दोनों निकालना. कौन बताएगा मुझे distance कैसे निकालेंगे और displacement कैसे निकालेंगे? बताओ बच्चों. How to find distance and displacement here? अच्छा, सतप्रीत ने ऑप्शन 4 बताया है, तो लेट्स चेक कि ऑप्शन 4 सही है कि नहीं. देखते हैं आप सतप्रीत, है ना. देखो अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस यहाँ से इधर तक ये सरकमफरेंस का हाफ कर देंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 pi r divided by 2, that is pi into r. So the radius is 40. If you take 3.14 into 40, the radius, you will get the distance. So if you calculate 3.14 into 40, सतप्रीत यही गलती तुमने 2 pi r लेके कर दिया मेरे ख्याल से. तो ये आता है 125.6 मीटर. तो दिस इज इक्वल टू 126 मीटर डिस्टेंस. हड़बड़ाना नहीं है कभी भी, है ना सतप्रीत. Always you have to focus, you have to understand कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है. So what you need to do, try and understand the question, draw a rough diagram and then calculate. थोड़ा टाइम 1 मिनट ज़्यादा लगेगा या कुछ सेकंड ज़्यादा लगेगा, बट देन उसमें आंसर हमेशा सही आएगा. एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है. मान लो तुमको 45 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे में, तुमने पूरे 45 अटेम्प्ट कर लिए और उसमें से 10 गलत कर लिए, तो 35 into 4 तुमको कितने मार्क्स मिले? 140 और -10 मतलब 130 मार्क्स मिले. और लेट्स से तुमने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें 2 ही गलत हुए, है ना, क्योंकि तुम 45 तक नहीं कर पाए, तुम धीरे धीरे कर रहे हो. तो 40 into 4 माइनस ऑफ 2 into 1, 160 minus 2, ये कितना हो गया? 158. तो
तो डिफरेंस समझो, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा और इसमें रह जाओगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि गलतियां कम करने। वैसे बहुत अच्छा अटेम्प्ट, तुमने एकदम फटाक से आंसर बताया, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। अच्छा, अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो भाई डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी विच इज इक्वल टू 40 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 80 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 80 मीटर, डिस्टेंस हो गया 125.6, मतलब अप्रोक्सीमेटली 126 मीटर हो गया। तो ये हमारा पहला ऑप्शन, द ऑप्शन 1 इज करेक्ट इन दिस। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? सबको आ रहा है समझ अच्छे से? शिफा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली? Yes, sir. ग्रेट। बेट्सी? So let's move to the next question now. So I'll give you 2 minutes to attempt this. A particle travels from A to B from this point to this point along a circular path of radius r. Distance and displacement of the particle. We have to find the distance as well as displacement. Please try it once. Betsy, you have to think again. There is some error. देखो क्या है बच्चे कि वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस इज अलोंग दिस। तो डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ आर्क हमें पता है, आर थीटा हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क यहाँ से यहाँ तक। तो द डिस्टेंस इज आर थीटा, चारों ऑप्शन में आर थीटा ही दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट इज दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैन बी फाउंड आउट बाय ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू थीटा बाई 2। So you will find this distance as r sine theta by 2. This is r cos theta by 2 and this is r sine theta by 2. So you will find AC is equal to r sine theta by 2 and AB will be equal to 2r sine theta by 2. So fourth option is the correct option. The displacement is AB, which is twice of AC, and this angle is theta by 2. This will be, this is r, then this point OC is equal to r cos theta by 2 and AC is r sin theta by 2 by trigonometry. Has everyone understood this? Is it clear to everyone? बताते जाओ बेटा कि हो गया, yes, no. If you keep on telling, it will be easier for me to gauge whether you have understood or not. Okay. So let's move to the next question now. So uniform speed, an object is said to be moving with uniform speed if it covers equal distances in equal interval of time. So when objects cover equal distances in equal interval of time, we say that the object is moving with uniform speed. Howsoever small these intervals can be of 1 second also, 0.5 second also, 0.01 second also. कितना भी छोटा इंटरवल कर दो, equal interval of time में equal distance जब travel करेगा, then we say that it is moving with uniform speed. Now comes variable speed. Variable speed क्या है? When an object moves unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time, then we say that the object is moving with variable speed. Average speed पे आते हैं.
Average speed क्या है? When an object is moving with a variable speed, then the average speed of the object is that constant speed with which the object covers the same distance in a given time, right? If it would have been moving with the same speed. So अब average speed को calculate कैसे करते हैं? Total distance traveled by total time taken is average speed. This is the formula, right? So let's say an object is moving from point A to B, and let's say it covers x1 distance in t1 time, another x2 distance in t2 time, x3 distance in t3 time, and so on, xn distance in tn time. So the average speed है ना is v bar या v average कुछ भी लिख सकते हैं is equal to sum of all the distances, total distance x1 plus x2 plus x3 plus xn divided by t1 plus t2 plus t3 and dot 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 up to tn. So sum of all the distances by sum of all the time interval will give you the average speed, right? ये तो सबसे इजी है जब हमें टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है. अब अगर हमें टाइम और डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, टाइम और स्पीड दिया हुआ है, लेट्स से an object moves a distance s1 with speed v1, distance s2 with speed v2, distance s3 with speed v3, and so on. So if you have to find the average speed, then in that case how do you find it is total distance by total time taken. So distance is s1 plus s2 plus s3 and so on. टाइम टेकन, टाइम क्या होगा इस वाले में, ये जो पहला पोर्शन को कवर करने के लिए टाइम कितना ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है टाइम. सो t1 हमें पता है, टाइम t1 विल बी इक्वल टू s1 बाय v1, t2 इज इक्वल टू s2 बाय v2, t3 टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस s3 बाय v3. सो ये सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं t1 प्लस t2 बाय t3, तो s1 बाय v1 प्लस s2 बाय v2 प्लस s3 बाय v3, टाइम हम लोग को निकालना, राइट? तो ये हमारा एंड सो ऑन. तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा v बार, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल स्पीड, टोटल टाइम टेकन. क्लियर बच्चों? So you can see when you have distance and speeds given, then the average speed is found out by this formula. Right? Now, if you have an object moving equal distances with different speed, let's say an object is moving first s distance, the first part of the distance, half part, with a speed v1 and another half part with a speed v2, then average speed, बड़े बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, they write it v1 plus v2 by 2. That's not the correct answer. It will be distance, total distance travel s plus s by total time taken, distance by speed s by v1 plus s by v2. If you calculate this, you will get 2s divided by v2s plus v1s by v1 v2. इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 v1 into v2 into s is s into v1 plus v2. So s gets cancelled. So average speed is 2v1 v2 divided by v1 plus v2. So you can see this average speed in this case is 2v1 v2 by v1 plus v2. Now another case, if a particle travels with speed v1, v2, v3 and time t1, t2, t3. So we know the speeds and we know the time. We don't know the distance. In this case, distance आराम से निकाला जा सकता है. पहला वाला distance जो होगा that will be speed into time v1 into t1. Second distance s2 will be equal to v2 into t2.
third distance S3 will be equal to V3 into T3, speed into time, right? So we are taking a condition where the object is moving with different speeds for different amount of time. So let's say it is moving with V1 speed for T1 time, V2 speed for T2 time, V3 speed for T3 time, and so on. So what we'll do, we'll find the distances. Why? Because the formula says total distance by total time is average speed. So total distance in this first case, जो यहाँ से यहाँ travel करेगा उसमें distance क्या होगा? S1 will be equal to V1 into T1. Distance travel in this interval, S2 is equal to V2 into T2. This interval, S3 is equal to V3 into T3, and so on. Right? So average speed is equal to V1 T1, V2 T2, V3 T3, and so on, divided by T1 plus T2 plus. Okay. So T1, T2, T3 up to Tn. Then we have average speed is V1 plus V2 plus V3 up to Vn divided by n. So average speed is equal to arithmetic mean of individual speeds. Okay. ये कब होगा? जब ये सारे intervals equal होंगे. So if all the intervals are equal, let's say each of them is equal to t, then what we'll do, ये जो equation था इसमें t1 t2 t3 सब के जगह t put कर दिया और common लेके बाहर कर लिया. यहाँ t plus t n times add करेंगे तो n into t हो गया. t और t cancel हो जाएगा, so this will be sum of all the velocities divided by n. So when time intervals are equal, then we say that v1 plus v2 by 2 हो जाएगा. अगर एक object v1 speed से t time तक जा रहा है और v2 speed से same time interval t तक जा रहा है, then we say that the average speed is equal to v1 plus v2 by 2. Is it clear to everyone? So now we'll do certain questions. Can you try doing this? Can you try doing this? Option 3, yeah, Satpreet, correct. Option 3 is the correct answer. Okay. So, see, a particle travels a distance s1 with speed v1. So, s1 with speed v1 and s2 with speed v2 in same direction. We have to find average speed of the particle. So, average speed is equal to total distance traveled s1 plus s2 divided by total time taken t1 plus t2. टाइम तो हमें पता नहीं है, टाइम हम लोग निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है. सो वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. सो दैट मीन्स t1 इज इक्वल टू s1 बाय v1 एंड टाइम t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस s2 बाय v2. सो ये क्या हो जाएगा? s1 बाय v1 प्लस s2 बाय v2. सो इफ यू सी द एवरेज स्पीड हियर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है बच्चों? लिख लिया सभी ने? Let's go to the next one now. Try doing this 16th one. ये सब अभी हम लोग डिस्कस किए हैं.
Try the 16th one. This question. Which option is the correct option? भाई क्या कह रहा है यहाँ पे? Yes, Betsy, correct answer. Very good. So, a particle travels with a speed v1 for time t1. So, speed v1 for time t1 and speed v2 for time t2. Its average speed of journey is, so if we have to find the average speed, we know that it is distance traveled. So distance traveled S1 will be speed into time V1 into T1. Distance travel in the second case S2 is equal to V2 into T2. The distance travel is speed into time. So average speed will be equal to S1 plus S2 divided by T1 plus T2. S1 हम लोगों ने निकाल लिया है, स्पीड इंटू टाइम होता है, मतलब V1 T1 plus V2 T2 divided by T1 plus T2, right? So V1 T1 plus V2 T2 divided by T1 plus T2. Option 2 is the correct answer. Betsy, मैं थोड़ा बहुत हिंदी यूज करता हूँ, आप समझ जाते हो ना? There is no problem ना? If you say I will only stick to English, but then शायद बाकी दोनों को प्रॉब्लम होगी अगर हम बस इंग्लिश में बात करें. If there is a problem in my language part, you are not able to understand because I am speaking too much of English or too much of Hindi, or if it is fine, please let me know your feedback. Okay, Satpreet, thanks. Betsy and Shifa, आप लोग के लिए भी ठीक है? मतलब इंग्लिश हिंदी का मिक्स इज फाइन और Yes, sir, it is fine. it's fine. चलो, good, good, good. Betsy, is it fine? Waiting for your answer. Chalo, good. Let's go to the next question, 17th one. Please try doing this. हाँ, ये तो अभी तुरंत हम लोगों ने किया था. बहुत बढ़िया. Good, Satpreet. You remembered it. A person travels along a straight road for half the distance with velocity v1 and remaining half with velocity v2. तो भाई आधा डिस्टेंस मतलब s डिस्टेंस v1 स्पीड से और अगला s डिस्टेंस v2 स्पीड से, राइट? सो अब यहाँ पे अगर हम लोग टाइम निकालेंगे, t1 डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, s बाय v1 हो जाएगा, और t2 निकालेंगे, s बाय v2 हो जाएगा. Average speed is total distance travel s plus s by total time taken s by v1 plus of s by v2. So this is 2s by s times v2 plus s times v1 by v1 v2. v1 v2 ऊपर चला जाएगा, 2s into v1 v2 divided by s times v1 plus v2. s और s cancel हो जाएगा. Average speed is 2v1 v2 divided by v1 plus v2. So this is your average speed. क्लियर बच्चों? क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ इट इज क्लियर, प्लीज ट्राई डूइंग दिस.
सप्रीत एक बार चेक कर लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी तो नहीं दिख रहा है इसमें। चलो एक बार करके देख लेते हैं, पता नहीं, हो सकता कभी कभी बुक्स में आंसर्स गलत भी होती हैं। ठीक है। A particle covers n equal distances with speed. Average speed of journey is given by, so we know that n equal distances, right? S distance, S distance, S distance, and ऐसा ऐसा करके n n ऐसे पार्ट्स हैं। और इसमें स्पीड v1 से, इस पे v2 से, इस पे v3 से, इस पे v4 एंड सो ऑन। तो टाइम t1 जो होगा डिस्टेंस बाय स्पीड s बाय v1, s बाय v2, ये t2 टाइम हो जाएगा। एंड देन थर्ड इंटरवल में जो टाइम t3 होगा s बाय v3 एंड सो ऑन। सो टोटल जो एवरेज स्पीड है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मीन्स s प्लस s अप टू n टाइम्स divided by total time means s by v1 plus s by v2 plus s by v3 and so on, right? Now s s s n times ऐड करोगे तो n into s हो जाएगा। और इन सब में डिनोमिनेटर में सब में s है, कॉमन ले लो बाहर, अंदर बचेगा 1 by v1 प्लस 1 by v2 प्लस 1 by v3, और ये कहाँ तक जाएंगे 1 by vn तक, राइट? अब एस एस कट गया, सो दिस इज n डिवाइडेड बाय 1 by v1, 1 by v2, 1 by v3 and up to 1 by vn. So this is option 1. ये तब होता जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जाता, मतलब इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल होता। यहाँ इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल नहीं है, n इक्वल डिस्टेंसेस है। क्लियर बच्चों? लिख लिया सभी ने? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 19th वन। अभी तुरंत हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो जाता है, अरिथमेटिक मीन हो जाता है। क्या होगा आंसर इसका? यस सतप्रीत, करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल्स along a straight line for the first half of journey with speed v1 and next half with speed v2। मतलब टी टाइम दोनों इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें स्पीड v1 है, इसमें स्पीड v2 है। डिस्टेंस ट्रेवल स्पीड इनटू टाइम v1 t हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल सेकंड केस में स्पीड इनटू टाइम मतलब v2 इनटू t हो गया। अब ये एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, so s1 plus s2 by total time taken t plus t। s1 plus s2 क्या हो गया, v1t plus of v2t divided by t plus t। so this is v1 plus v2 into time t divided by 2t। कैंसिल कर दो, ये क्या हो गया v1 plus v2 अपॉन 2 हो गया, ये एवरेज स्पीड है। क्लियर है बच्चों? Is it clear to everyone? Let's move to the next one now.
Please attempt this question. इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए. क्या बोल रहा है इसमें? अ बॉय कवर्स अ डिस्टेंस ए बी ऑफ 2 किलोमीटर, राइट, with speed 2.5 kilometer per hour while going from A to B and comes back from B to A in speed 0.5 किलोमीटर पर आवर. तो A से B जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर का है. ये डिस्टेंस किस स्पीड से जा रहा है? 2.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से. और उसके बाद पहले A टू B गया और फिर B टू A वापस आ रहा है, कम्स बैक फ्रॉम B टू A विथ अ स्पीड ऑफ 0.5 किलोमीटर पर आवर. So time taken in the first case will be distance by speed 2 by 2.5, right? So this is equal to, दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो 4/5 आवर्स हो गया, राइट. यहाँ सेकेंड केस में T2 अगर निकालते हैं, यस सतप्रीत, इट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2. T2 निकालेंगे तो दिस इज डिस्टेंस बाय स्पीड, सो 2 by 0.5, so this will be 4 hours, right? So total, अब ये जो हमारा एवरेज स्पीड है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मतलब 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 4/5 प्लस 4 hour, right? So 2 plus 2 is 4 divided by, yes Betsy, correct answer. So we will have 24/5. ये ऊपर चला जाएगा तो मतलब 20 divided by 24. So 4 5s are and 4 6s are 5/6, which is 0.83 kilometer per hour. Clear है बच्चों? Let's move to the next one now. Try doing this. So this is a bit tricky one. It's not straightforward as we were doing all the questions. So body traverses half of the distance with a speed v naught, है ना? तो हमारे पास ठीक है, ये मान लो s डिस्टेंस है, ये s डिस्टेंस है. बॉडी ट्रेवर्सेस हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v naught, तो s डिस्टेंस हो गया v naught स्पीड से. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद स्पीड v1 फॉर हाफ द टाइम एंड विद स्पीड v2 फॉर हाफ द टाइम. मतलब कि ये t टाइम तक v1 स्पीड से और अगले t टाइम तक v2 स्पीड से, आधे आधे टाइम में इसको डिवाइड कर लिया for other half of the time. The mean speed of the body, okay, so mean speed of the body averaged over whole time of motion. अब देखो ये जो टाइम, इसको ये यहाँ से यहाँ जो आने में जो टाइम लगा, इसको अगर t1 मानते हैं, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड s by v naught हो जाएगा, राइट?
और ये जो यस बेट्सी, वेरी गुड, फोर्थ करेक्ट, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. सो एवरेज स्पीड हम लोग निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया, एस प्लस एस. टोटल टाइम टेकन, अब यहाँ पे देखो हम लोग वेरिएबल जितने कम रखें उतने अच्छा है. T1 प्लस T प्लस T टोटल टाइम है, टोटल डिस्टेंस 2s हो गया. अब इसको s के टर्म्स में T1 को लिख दोगे तो s बाय वी नॉट. क्यों? क्योंकि देखो हम लोग को वेलोसिटीज दिए हुए हैं ना, वेलोसिटीज दिए हुए हैं तो वेलोसिटीज के टर्म्स में ही आंसर लिखेंगे. T1 इज s बाय वी नॉट, राइट. प्लस ऑफ T प्लस T, T क्या हो जाएगा, इक्वल टाइम. तो ये देखो ये T प्लस T कर रहे हैं, राइट. अब हमें पता है V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी इज S. तो ये क्या, T कॉमन ले लोगे तो T इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 हो जाएगा ना. यहाँ पे अगर हम लोगों ने T कॉमन ले लिया, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू S. तो अब ये जो T को हम लोग S बाय V1 प्लस V2 प्लस S बाय V1 प्लस V2 ऐसा लिख लेते हैं. सो दिस बिकम्स 2S डिवाइडेड बाय, ये इन सब में S कॉमन है, S को कॉमन ले लेंगे, राइट. यस सतप्रीत, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. S को कॉमन ले लिया और उसके बाद V नॉट, राइट. ये जो V नॉट इंटू V1 प्लस V2 हमारा एलसीएम ले लेते हैं. सो V नॉट इंटू V1 प्लस V2 एलसीएम ले लेते हैं. ऊपर आ जाएगा हमारा V1 प्लस V2, राइट. और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ V नॉट आ जाएगा बिकॉज S बाई V1 प्लस V2, S बाई V1 प्लस V2, राइट. सो दिस इज 2S बाई V1 प्लस V2. सो ये आ गया. अब ये हम लोग सब देखो ये S और S कैंसिल हो गया. सो एवरेज स्पीड V बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स V नॉट इंटू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, V1 plus V2 plus twice of V naught. This is what the answer is. Option 4. ठीक. तो जो क्वेश्चन नीट में लेवल पे आएंगे अच्छे लेवल पे, तो ये इस तरह के क्वेश्चन तुमको ज्यादा दिखेंगे, मतलब जिसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो. स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आएंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे. क्लियर है बच्चों? आ गया समझ? आगे बढ़े. लेट्स गो नेक्स्ट. This is a similar question. Try doing this. So, see, a body traveling along a straight line traverses 1/3 the distance with speed v naught. So, ये मान लो टोटल डिस्टेंस s है यहाँ से यहाँ,
इसका 1/3 डिस्टेंस मतलब s/3 डिस्टेंस, traveling along a straight line traverses 1/3 the distance with a speed v0. With speed v0, the remaining part of the distance was covered with speed v1 for half the time. So t time तक speed v1, ठीक, and with speed v2 for another half of the time. Similar question है, right? So अब ये जो distance है, बचा हुआ distance, this is equal to 2s/3, right? s/3 ये distance है, ये 2s/3. तो ये अगर हम लोग करेंगे तो देखो v1t प्लस v2t, स्पीड इंटू टाइम ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड इंटू टाइम ये डिस्टेंस हो गया, दिस इज इक्वल टू 2s/3. सो v1 प्लस v2 into time t is 2s/3. So this will give you time t is equal to 2s/3 times v1 plus v2. So now when I say average speed is total distance traveled by total time taken, right? So total distance traveled will be equal to s by total time taken. So in the first, Option 4 is correct. yes, option 4 is correct. Correct answer बच्चा. So अब ये total distance travel, तो अब ये total distance s है. Time taken in the first one, this is equal to distance by speed, s/3 distance by speed, s/3 v0 हो गया, प्लस टाइम t जो है ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, 2s/3 टाइम्स v1 प्लस v2 प्लस 2s/3 टाइम्स v1 प्लस v2, ठीक है. सो ये एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, s डिवाइडेड बाय, अब हम लोग जो है ना ये इसको लिख सकते हैं s/3v0 प्लस 2s प्लस 2s 4s हो गया, 4s डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स v1 प्लस v2. ये 3 को ऊपर लेके चले जाते हैं, सो दिस इज 3s डिवाइडेड बाय s कॉमन ले लो, v1 प्लस v2 प्लस 4 टाइम्स v0 डिवाइडेड बाय v0 इंटू v1 प्लस v2. s और s कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स v0 into v1 plus v2 divided by v1 plus v2 plus 4 times v0, right? So ये ऑप्शन है. क्लियर है बच्चों? सो आज हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड ये सारी चीजें की. अगली क्लास में हम लोग इसके आगे करेंगे एवरेज वेलोसिटी, फिर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को तो वेलोसिटी कैसे मिलेगा, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट ये डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है. और उसके बाद फिर हम लोग ग्राफ करेंगे, और ग्राफ करने के बाद हम लोग कुछ बेसिक और कुछ क्वेश्चंस करके विल फिनिश दिस ऑफ, ठीक है. क्लियर है बच्चों? सो दिस इज इट फॉर द डे. टुडे विल स्टॉप हियर ओनली, और इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों.